Okay, kids. So today the chapter is Biosphere. Okay, I'll be taking the chapter Biosphere in your SST. So the page numbers for this specific chapter would be 206. The PDF page number is 216. Okay, so this is chapter 5th of your Biosphere, and we might have discussed about environmental issues and all that stuff before, but Biosphere is let's just see what it means. Okay, so here you have the meaning for biosphere. Okay, you can underline this meaning. And so it just says, I'm just going to read it. Earth is the only planet which has various forms of life on it. Biosphere is the part of the earth where life exists. The biosphere is the fourth component of the earth, and it is totality of all living things on earth. Okay, so earth is the only planet that we know of which has life. Okay, so me, you, Anushka ma'am, Rohini ma'am, ठीक है, we all are living beings, right? And Earth is the only planet. There are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, all of that. But Earth is the only one where life exists. Okay, that means Earth has a biosphere. Okay, and biosphere is the part of the Earth where life usually exists. Okay, now biosphere doesn't exist below the surface of Earth. Okay, if you go down अर्थ के लैंड के नीचे, if you go towards core and mantle, biosphere doesn't exist there. You know why? Because there's no life there. Okay, so that's the meaning. I hope you are underlining it. I'm just gonna mark it for you. Okay, so this is the meaning of biosphere. Make sure you underline it. Okay, now ecology. So there are some definitions. We'll just go through them one by one. Okay, ecology is the study of the interaction of living organisms with their physical, chemical, and biological environment. Okay, so ecology, just say we have physics, we have chemistry, biology, you'll have biology in future, you have maths. So maths is the study of numbers, physics is the study of natural science, chemistry is the study of atoms. Similarly, ecology is the study of interaction between living organisms. Okay, I mean, it could be a physical environment or a chemical or even a biological environment. Okay, so if two animals are interacting with each other, then we studying that is called ecology. Okay, in a natural environment, there is a perfect balance between the various organisms living together in the biosphere. This is known as ecological balance. Okay, so like if there exists a balance properly, ठीक है, inside a forest, if no human beings have tampered with the environment, then that balance is known as ecological balance. Okay, now ecosystem is a community of plants and animals together with their immediate environment, including the inanimate part of that environment. It is also defined as the total assemblage of components entering into the interaction of group of organisms. ठीक है, now I know कि ये definition it looks like kind of big, it's kind of difficult. It's actually not. सिर्फ इसमें सिर्फ ऐसा ही बता रहे हैं कि इकोसिस्टम है ना, वो प्लांट्स एंड एनिमल्स उनकी कंबाइन में जो कम्युनिटी होती है ना, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं. ठीक है, एंड वो लाइक उसके साथ का एनवायरमेंट. ठीक है, प्लांट्स के आसपास का जो एनवायरमेंट है, एनिमल्स के आसपास का जो एनवायरमेंट है, इवन नॉन लिविंग थिंग्स, लाइक लैंड कैसा है, और दी agriculture around it, or even the terrain around it. Okay, is it a mountainous land, or how's the weather around it, all that inanimate things, things which are not living, usko bhi साथ में consider करो, then it's an ecosystem. Okay, okay, now without an ecosystem or any ecological balance, जो भी plants and animals होते हैं ना, they cannot live, they cannot exist, because you need the ecological balance for them to exist. वो अकेले भी exist नहीं कर पाएंगे और group में भी exist नहीं कर पाएंगे. Okay, that's why the ecological balance is like super important. Okay, remember that ecological balance is the most important thing in a biosphere. Okay, now there's one more, there are a few more definitions. Environment. Okay, you know what environment is. I'm just gonna read it. Environment is the surrounding where an organism, a community, or an object exists. It creates favorable conditions for the existence and development of all living organisms. The environment is of two types. Okay, natural or geographical, and cultural or man-made. ठीक है, environment is okay. Environment का meaning क्या होता है, guys? It's just like जो भी सराउंडिंग है. ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, पिक अप अ टाइगर, पिक अप एन एलिफेंट, डजंट मैटर, उसके अराउंड का जो भी एनवायरमेंट, उसके अराउंड जो भी चीज़ है सराउंडिंग्स में है, विल कॉल दैट एन एनवायरमेंट. ओके, एंड एनवायरमेंट्स
could be of two types. Okay, ठीक है, एक natural environment होता है, ठीक है, geographical environment, natural environment, जो भी बोलो, forests है, फिर rivers and oceans and all that, that is a natural environment. Okay, but there are other man-made environments as well. Man-made meaning कि जो भी हम इंसानों ने बनाया environment, ठीक है, cities, towns, railways and all that stuff, we have made that, and that entire surroundings, that is a man-made surrounding. Okay, so remember the difference. There are two types of environment: natural or geographical, and cultural or man-made. ठीक है, you can use either one of them. ठीक है, यहाँ से natural उठाओ, यहाँ से man-made उठाओ, that's completely fine. Now, one more definition is environmental pollution. Okay, I'm sure तुम सबको पता है what is pollution, right? Pollution is just mean कि हम हमारे surroundings के आसपास, we throw waste, we try to change the surroundings, and it's like harming the environment. So that is environmental pollution. Okay, I'm just gonna read it. Environmental pollution is the unfavorable alteration of our surroundings, wholly or partially, by human action through direct and indirect effects. Okay, so guys, underline this, and all the definitions I spoke about, just underline the first paragraph in them. Okay, it's like super easy, and I'm pretty sure you guys are smart, you already know this. Okay, so environment का pollution का definition इसमें ऐसा दिया है कि human के द्वारा जो भी changes आते हैं environment में, and बुरे changes जो आते हैं environment में, we will call that environmental pollution. Okay, now if you think about it, environmental pollution is like one of the most terrifying ecological crisis of today. ठीक है, the factors like overpopulation, बहुत populations बढ़ती जा रही है, industrialization, there are like lots and lots of new factories, new industries coming up, and due to that उनसे pollution बढ़ रहा है और environment पे बुरा effect आ रहा है. ठीक है, and urbanization, cities, नए नए cities बन रहे हैं, which is good for humans, but it's really bad for the environment. Okay, overutilization of automobiles, etc. Now automobiles का overutilization मतलब cars, scooters, all that, उसका ज़्यादा use हो रहा है. अगर बाजू में जाना है, you can take your cycle, but still you decide to take your bike, or your car, then that's like an overutilization, and that is harming the environment. Okay, because if you think about it, there's like so much pollution happening because of you using a motor vehicle. Okay, we'll see soon about air pollution, but these are the factors, these are the reasons there's environmental pollution. Okay, pollution, pollutants, okay, those are the things which are causing the pollution. ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल pollutants उसको बोलेंगे, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हम कचरा फेंकते हैं वो pollutant है, और उससे pollution होता है. Okay, remember the distinction. I'm just going to mark it on the screen. Pollutants are the substances that cause pollution. ठीक है, pollutants could be natural and they could be man-made. Okay, man-made pollutants are considered to be more dangerous and hazardous than natural pollutants. ठीक है, अभी pollutants दो टाइप के हो सकते हैं. ठीक है, man-made once again जो हम इंसानों ने बनाया है, and natural pollutants भी कभी कभी exist करते हैं. ठीक है, sometimes greenhouse gases and all that stuff, that also sometimes happens to be natural, but हम humans जो भी pollutants create करते हैं ना, those are more dangerous for the environment. Okay, we'll just read it. The pollutants may be visible like smoke, gases, dust, garbage, sewage, etc. ठीक है, smoke जो होता है, gases अलग अलग होते हैं, dust, dust particles, we throw garbage, sewage, all that stuff, those are visibles. Okay, and invisible like bacteria, toxic chemicals mixed with food and water and soil. ठीक है, bacteria are so small, ठीक है, you can't even see a bacteria without a microscope. Okay, so those are basically invisible. Toxic chemicals, जो पानी के अंदर chemicals mix किए होते हैं and all that stuff, you cannot see that, okay, without using a powerful microscope. Okay, ठीक है, so those are invisible pollutants. ठीक है, remember visible में smoke, gases, dust, garbage, sewage, वो visible pollutants है. Invisible pollutants के अंदर you have toxic chemicals, bacteria, all that stuff. Okay, अभी there are some types of pollution. ठीक है, कौन से pollutions होते हैं? Once again, you guys are smart, you already know this, but there are some I'll just okay, there are 4 types of basic pollutions. Okay, air pollution, and guys remember this is important. Air pollution, water pollution, soil pollution, and noise pollution. ठीक है, noise pollution उसको बोलते हैं जो तुम लोग क्लास में चिल्ला चिल्ला के करते हो ना, उसको noise pollution बोलेंगे. ठीक है, okay,
Okay, so let's discuss the first type of pollution, that is air pollution. Okay, now you already know about air pollution, right? Air pollution वो pollution होता है जो तुम्हारे कार या फिर तुम्हारे व्हीकल में से जो स्मोक निकलता है, और चिमनीज में से जो स्मोक निकलता है, वो सारा एनवायरमेंट के अंदर मिक्स होता है, एंड दैट इज हाउ द एयर इज पॉल्यूटेड. ओके, सो नाउ देयर इज अ डेफिनेशन गिवन हियर बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, WHO के द्वारा दे हैव डिफाइंड एयर पॉल्यूशन as substances put into the air by the activity of mankind in concentration sufficient to cause harmful effects to his health, vegetation and property. ठीक है, सो उनकी डेफिनेशन ऐसा बोल रही है कि सब्सटेंसेस जो भी सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वो जो भी गैसेस है वो हम एयर के अंदर पुट कर रहे हैं. ठीक है, यूजिंग चिमनीज एंड ऑल दैट स्टफ, वो एयर में मिक्स हो रहा है, एंड इतना अमाउंट में मिक्स हो रहा है कि उससे हमको ही हार्म होगा. ठीक है, लाइक आईज में इरिटेशन होना या फिर नॉट बीइंग एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली, all those effects affect us as well as जो हमारा वेजिटेशन है और इवन प्रॉपर्टी. ठीक है, वो सबको इफेक्ट करेगा ये. ओके, सो द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स आर नेचुरल एंड मैन मेड. ठीक है, वंस अगेन ऐसा जैसे बोला था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स. ठीक है, मैन मेड एंड नेचुरल. अभी नेचुरल पॉल्यूटेंट्स होते हैं. ओके, सो फॉर एग्जांपल वॉल्केनोज, फॉरेस्ट फायर, कॉस्मिक डस्ट, दोज आर टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन. ठीक है, इफ अ वॉल्केनो, जो वॉल्केनो होता है ना, ज्वालामुखी, if it erupts then उसमें से बहुत सारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ब्लैक स्मोक, ऑल दैट स्टफ, वो एयर के अंदर मिक्स होता है, उससे एयर पॉल्यूशन होता है. ठीक है, बट नेचुरल जो भी होते हैं ना पॉल्यूटेंट्स, उसके कंपैरिजन में मैन मेड पॉल्यूटेंट्स आर लाइक सुपर डेंजरस. ओके, सो मैन मेड पॉल्यूटेंट्स दे इंक्लूड गैसेस फ्रॉम इंडस्ट्रीज. ठीक है, इंडस्ट्रीज के जो चिमने में से गैस बन होता है. ठीक है, डोमेस्टिक यूज, वी यूज अ लॉट ऑफ कोल, पेट्रोल एंड ऑल दैट स्टफ. डोमेस्टिक यूज में वी बर्न फायर्स, उससे भी जो गैसेस निकलते हैं दैट पॉल्यूट द एयर. ओके, ऑटोमोबाइल्स, जैसे कार बोला, माइनिंग. ओके, इफ यू आर माइनिंग, जो कोल माइनिंग एंड ऑल दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइनिंग, उससे भी बहुत एयर पॉल्यूशन होता है. ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स. ओके, अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में क्या होता है, लाइक दे यूज न्यूक्लियर फ्यूल and they generate steam. अभी जो भी steam होती है ना, it goes into the atmosphere and it's technically polluting the atmosphere. ठीक है, and yes, steam can also be a type of air pollution because it leads to greenhouse effects. ठीक है, वो हम आगे देखेंगे. न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं जो एक्सप्लोड होते हैं. ठीक है, एंड उसकी वजह से भी बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, उससे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है एयर के अंदर. एयर के अंदर रेडियो एक्टिव मटीरियल्स ऐसे फैला जाते हैं, एंड इट्स लाइक सुपर बैड. ओके, सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स का लिस्ट दिया है. ठीक है, कौन से पॉल्यूटेंट्स है जो लाइक दे आर इम्पॉर्टेंट एंड जो मेन रीजन होते हैं. ठीक है, सो आई वॉन्ट यू गाइज टू रिमेंबर दिस, इसको अंडरलाइन भी कर लेना. कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज द सिंगल मोस्ट वर्स्ट टाइप ऑफ पॉल्यूशन एवर. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. ठीक है, अभी नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर बहुत अलग अलग टाइप्स के ऑक्साइड होते हैं, वो सब आ गए. ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFC, रिमेंबर दिस. ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ से जनरेट होते हैं? यूजुअली जो पुराने AC होते हैं ना, उसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स उसमें से जनरेट होते हैं, एंड इट्स अ CFC गैस. एंड उसकी वजह से अपना जो ओजोन लेयर होता है ना, द ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट्स अस, उसकी वजह से ओजोन लेयर उसमें होल्स पड़ जाते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई CFC इज लाइक सुपर बैड. Okay, and दूसरे hydrocarbons like methane, ethane and all that stuff, if you burn them, there's a lot of pollution. Okay, now the important effects are change in weather and climatic conditions. ठीक है, weather change होता है, change हो जाता है, climatic conditions बिगड़ जाते हैं. Ozone depletion, as I told you, ozone जो layer होता है उसके अंदर holes पड़ जाता है, it gets on depleting, that's super bad. Greenhouse effect, ग्रीन हाउस इफेक्ट जस्ट मीन्स के जो अर्थ पे सन की जो हीट आती है ना, वंस इट गेट्स इनसाइड इट कैन नॉट गो आउट, एंड उसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, एंड अर्थ कीप्स ऑन गेटिंग वार्मर. ओके, एंड उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का इशू आ जाता है. ठीक है, अभी ग्लोबल वार्मिंग का जो भी इशू है, इट अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, प्रॉब्लम विद रिस्पिरेटरी सिस्टम्स, अफेक्ट ऑन लाइफ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. ठीक है, हमारी हेल्थ तो खराब होती है, हमारे जो लंग्स होते हैं, वी कैन नॉट एबल टू ब्रीथ, वी कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपर्ली बिकॉज ऑफ ऑल दीज पॉल्यूटेंट्स, एंड लाइक इफेक्ट ऑन लाइफ एंड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स को भी इससे बहुत अफेक्ट होता है. ठीक है,
Now measures to control air pollution are control of gaseous pollutants, control of emission from automobiles, planting more trees, use of non-conventional energy sources, awareness program, legal control, literacy and education. ठीक है, what does that mean? कि जो हमारे गैसेस पॉल्यूशन है ना उसको हमें कंट्रोल में रखना चाहिए. दैट मीन्स कि हमारा जो ऑटोमोबाइल्स में से जो गैसेस निकलती है वी हैव टू वी कैन कंट्रोल इट बाय यूजिंग लेस ऑटोमोबाइल्स. We can plant more trees. Okay, अगर ज़्यादा trees, if we plant more trees, trees will suck in all the carbon dioxide and give us oxygen. Okay, so that's a good thing. Use of non-conventional energy sources, that means wind power. You have seen that windmills, ठीक है, उसमें wind जाता है and then it rotates and then we get electricity. Solar energy, hydro electric energy as well. Dam में से पानी गिरता है, turbines spin and then you get electricity. Okay, so there are no pollution caused due using those energy sources. अवेयरनेस प्रोग्राम, पीपल शुड हैव एन अवेयरनेस, लाइक अवेयरनेस जनरली होनी चाहिए सब जगह पे कि सी देखो ये सारे इश्यूज यहाँ से आ रहे हैं, सो वी नीड टू बी अवेयर अबाउट दिस. ओके, लीगल कंट्रोल, सो गवर्नमेंट को लीगली कुछ फाइन्स इम्पोज करने चाहिए कि अगर बहुत सारे एयर पोल्यूशन हो रहा है ये इंडस्ट्री में से, तो फिर इंडस्ट्री को थोड़ा फाइन भरना पड़ेगा एंड ऑल दैट स्टफ. ओके, लिटरेसी एंड एजुकेशन, सो अभी आप एजुकेट हो रहे हो ना, यू आर फाइंडिंग आउट अबाउट ऑल ऑफ दिस, सो यू विल टेक केयर योर सेल्फ. ठीक है, सो ऐसा एजुकेशन इज लाइक सुपर important, and that's how you can control air pollution properly. Okay, so we saw about air pollution. Now let's just quickly see about water pollution. ठीक है, now water pollution की almost same definition है. Okay, water pollution is the alteration in physical, chemical and biological characteristics of water which may have harmful effects on human and aquatic life. ठीक है, same definition. जो भी अल्टरेशंस वाटर के केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं वाटर के अंदर, एंड उसका जो भी इल इफेक्ट होता है ह्यूमंस पे और इस टाइम एक्वाटिक जो लाइफ होती है ना उस पे, फॉर एग्जांपल फिशेस, ऑक्टोपस, शार्क्स एंड ऑल दैट स्टफ, उनको भी इशू होगा बिकॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन. So that is what we define as water pollution. ठीक है, now the important sources of water pollution are natural and man-made. See, once again, pollutants नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं. ओके, इट्स लाइक रियली इजी, अब तो याद होना चाहिए. ठीक है, तुम सबको natural sources, let's see: soil erosion, landslides, volcanic eruption, decay and decomposition of plants and animals. ठीक है, now natural pollutants में क्या आता है कि देखो अगर लैंडस्लाइड हो जाती है, ठीक है, if there is a piece of land, अगर वो पूरा इतना लैंड गिर जाता है, it falls inside the water, it's water pollution. ठीक है, soil erosion, सॉइल जो भी होती है, फार्म सॉइल, ठीक है, वो इरोड होते होते मतलब ऊपर की लेयर निकलते निकलते, if it goes inside water, it's a type of water pollution. Volcanic eruption, once again, volcano से जो भी gases निकलते हैं, ठीक है, और उसमें से जो भी smoke होता है, there are so many dust particles, if they go into the water, it's water pollution. ठीक है, one more, decay, death and decay. So if there are animals or plants which are dead, and if they are inside the water, the decay process, जो slowly जो भी bacteria होते हैं, ठीक है, they try to decay the animal body and that leads to water pollution once again. Okay, now man-made pollutions, industrial effluents, urban waste, domestic waste, agriculture waste, thermal waste, oil spill, offshore drilling, न्यूक्लियर वेस्ट एक्सेट्रा. ठीक है, मैनमेड के अंदर भी बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं. ठीक है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, अभी इंडस्ट्री से जो पानी निकलता है, जो भी केमिकल्स निकलता है, अगर उसको ट्रीट ना किया जाए, उसको सीधा पानी में डाल दो, देन इट्स वाटर पॉल्यूशन. ओके, ऑब्वियसली. अर्बन वेस्ट, जो सिटी से जो भी वेस्ट आता है, ऑल दैट वेस्ट फ्रॉम द होम, वो पानी में जाएगा, इट्स वंस अगेन वाटर पॉल्यूशन. डोमेस्टिक वेस्ट, जो हमारे घर से वेस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ऑल दैट गार्बेज गोज इनसाइड द वाटर, once again water pollution. ठीक है, now there's also so there's also agricultural waste, जो fertilizers and वो सब होते हैं, अगर वो wash off होके water में गए, pollution. Thermal waste, okay, so that's like thermal energy से जो भी waste होते हैं, ठीक है, वो सारे waste, once again water pollution. Oil spill, ठीक है, if a container, जो भी container होता है वो oil लेके जा रहा है, ठीक है, और वो कंटेनर में फॉर सम रीज़न ऑयल सारा स्पिल हो जाता है, तो ऑयल की पूरी लेयर बन जाएगी सी पे, एंड दैट्स लाइक रियली बैड. ठीक है, एंड उससे लाइक पानी का पॉल्यूशन वंस अगेन हो रहा है. ऑफशोर ड्रिलिंग, ओके, मतलब
ऑयल के लिए ड्रिलिंग कर रहे हो बट तुम पानी के अंदर ओशन के अंदर ड्रिलिंग कर रहे हो, उससे भी पॉल्यूशन होगा. एंड न्यूक्लियर वेस्ट, वंस अगेन न्यूक्लियर वेस्ट को अगर तुम सीधा पानी में डाल दोगे, इट्स वाटर पॉल्यूशन. ठीक है ना. once again this is like super easy. Okay, I want you to underline this. Okay, नेचुरल पॉल्यूशन में ये सब आएगा, मैन मेड के अंदर ये सारे इश्यूज आ रहे हैं. ठीक है. वाटर पॉल्यूशन के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं. ठीक है. ओशन वाटर पॉल्यूशन, जो भी ओशन और सी के अंदर जो पॉल्यूशन होता है वो एक टाइप का पॉल्यूशन होगा. और ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन. ठीक है. अभी ओशन वाटर पॉल्यूशन के अंदर जो भी ओशन के अंदर पॉल्यूशन हो रहा है वो सब उसमें गिना जाएगा. ग्राउंड वाटर मतलब जमीन के नीचे जो पानी है उसमें अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो देन दैट इज ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन. एंड रिवर वाटर पॉल्यूशन, जो रिवर्स जा रही है, ठीक है, उसके अंदर पॉल्यूशन होगा तो देन इट्स रिवर वाटर. एंड लेक के अंदर से अगर कोई भी लेक है वहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है देन इट्स लेक पॉल्यूशन. ठीक है. वाटर की जितनी जितनी अलग बॉडीज है, ठीक है, सी, ओशन, लाइक ओशन, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, अगर उसमें पॉल्यूशन हो रहा है तो इट्स दैट काइंड ऑफ पॉल्यूशन. ओके, इट्स सुपर इजी. वंस अगेन अभी वाटर पॉल्यूशन के इफेक्ट्स, ठीक है, उससे क्या इफेक्ट्स आते हैं, विल जस्ट सी इट. इट स्प्रेड्स waterborne disease and epidemics like chlorella, typhoid, diarrhea, jaundice, causes death of aquatic life, affects irrigation water and on agricultural crops, natures and features of water. ठीक है. अभी वाटर के पॉल्यूशन से बहुत सारे इश्यूज आते हैं. ठीक है. ऐसी वाटर कम्युनिकेबल डिजीज होती है. ठीक है. जो भी डिसीजेस है जो पानी के थ्रू स्प्रेड होती है. ठीक है. एंड उससे लाइक यू कैन गेट टाइफॉइड, यू कैन गेट जॉन्डिस. ठीक है. वो सारी डिसीजेस वाटर पॉल्यूशन के कारण होती है. अभी कॉजेस ऑफ इट कॉजेज द डेथ ऑफ एक्वाटिक लाइफ. अभी जो भी सारी फिशेज है, सारे एक्वाटिक लाइफ, सी के अंदर जो भी एनिमल्स है उन सारी की डेथ हो जाना बिकॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन. ठीक है. वो होता है इरिगेशन वाटर, जो भी पानी तुम खेत और जो भी फार्म में यूज कर रहे हो, अगर वाटर पॉल्यूटेड है देन इट्स गोना अफेक्ट योर क्रॉप्स. ओके, इट्स नॉट गोना बी प्रॉपर्ली यूज्ड एज वेल. एंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स पे इफेक्ट आएगा ऑब्वियसली. नेचर एंड फीचर्स ऑफ वाटर. ठीक है. अभी नेचर के अंदर जो भी पानी जहाँ पे होगा पॉल्यूशन, तो ऑब्वियसली अगर वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत गंदा गंदा पानी है, तो उसके आजू बाजू भी इश्यूज आएंगे. ठीक है. सो दैट इज वाई वी नीड टू figure out a way to control water pollution. ठीक है. अभी water pollution control करने के what we can do, so there are some measures given to control water pollution. Let's just see that. Okay, industrial effluents must be treated. मैंने जैसे बोला इंडस्ट्री का अगर जो भी वेस्ट है अगर उसको ट्रीट नहीं करेंगे, सीधा पानी में डालेंगे, इट्स गोना कॉज वाटर पॉल्यूशन. ठीक है. इंस्टेड व्हाट वी कैन डू इज इंडस्ट्री का जो भी सारा वेस्ट होता है ना उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करो केमिकली और फिर पानी के अंदर जाने दो. ठीक है. Drinking water sources must be kept clean. Sewage treatment plants, disposal of waste on water bodies must be controlled. ठीक है. अभी जो तुम्हारा ड्रिंकिंग वाटर होता है ना उसको सेपरेट रखो तुम्हारे जो पॉल्यूटेड वाटर्स है. ठीक है. बिकॉज अगर ड्रिंकिंग वाटर का जो भी सोर्स है अगर वो सेम हुआ पॉल्यूटेड वाटर जैसे, देन यू कैन बी ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर एंड इट्स रियली नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. ठीक है. सीवेज ट्रीटमेंट, जो सीवेज जाता है ना सारा, उसका प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट का प्लांट्स होना चाहिए. ऐसे ही सीवेज सारा डंप नहीं करना चाहिए. एंड देयर शुड बी प्रॉपर प्लांट्स एंड प्रॉपर प्लांट ट्रीटमेंट्स फॉर दैट एज वेल. ठीक है. डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट का डिस्पोजल होता है वाटर बॉडीज पे, उस पर बहुत नेक्स्ट लेवल कंट्रोल होना चाहिए. वरना अगर इफ वी कीप ऑन डंपिंग ऑल द वेस्ट and all the garbage in the sea, then it's gonna pollute the water so much and we won't have any water to drink. Okay, so it's like super bad. Okay, so we saw about water pollution. Now let's see about soil pollution. ठीक है. Now soil pollution is the decrease in quality of soils either due to human sources or natural sources or by both. ठीक है. soil pollution की बहुत easy definition है, यहाँ से highlight कर लेना तुम लोग अपनी बुक में. It just means कि जो सॉइल की जो क्वालिटी होती है ना उसमें डिक्रीज, क्वालिटी कम हो जाना. ठीक है. नेचुरल सोर्सेज से वंस अगेन एंड मैनमेड सोर्सेज से भी हो सकती है या फिर दोनों से सॉइल की क्वालिटी डिक्रीज हो सकती है. ठीक है. नाउ इट रिजल्ट्स, इन सारा का इश्यू क्या आता है कि उसकी वजह से सॉइल के अंदर इरोजन बढ़ जाता है. ठीक है. लैक ऑफ ह्यूमस, डिक्रीजिंग सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा. ठीक है. जो ह्यूमस जो होता है ना, जो ऑर्गेनिक जो भी न्यूट्रिएंट्स होते सॉइल के अंदर वो सारा डिक्रीज हो जाते हैं. सॉइल की ऊपर की पूरी लेयर इट जस्ट इरोड्स ऑफ. सो ठीक है. अब फिर देन यू वोंट बी एबल टू प्लांट मोर ट्रीज देयर और यू वोंट बी एबल टू हैव प्रॉपर farm के अंदर you have onion के plants, potato plants. You won't be able to have those plants properly because उसके लिए nutrients नहीं होंगे because of soil pollution. ठीक है.
नाउ उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे विल ऑल्सो डाई एंड इट्स नॉट रियली गुड. ओके, सो सोर्सेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन. अभी सॉइल पॉल्यूशन के कौन से सोर्सेज है? वंस अगेन वी नो दैट, ठीक है, नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है. तो लेट्स जस्ट सी, इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग का जो भी वेस्ट होता है अगर उसको सॉइल में डंप किया जाए देन इट्स सॉइल पॉल्यूशन. ठीक है, डोमेस्टिक एंड अर्बन वेस्ट, जो भी वेस्ट हमारे घर से या फिर जो सिटी में से जो भी वेस्ट आता है, ठीक है, इफ यू जस्ट डंप इट इनसाइड द लैंड then it's, you are causing land pollution and उससे like soil erode हो जाएगी and it just pollutes the soil. Okay, agriculture waste, nuclear waste. Okay, agriculture waste for example fertilizers को तुम सीधा ऐसे soil में if you like bury it inside the soil, it's really bad for the soil as well. ओके, जो उसका बाई प्रोडक्ट होता है फर्टिलाइजर्स का, यू शुडंट लाइक जो सारे केमिकल्स होते हैं यू शुडंट जस्ट डंप इट इनसाइड द सॉइल. ठीक है, एंड ऑल्सो न्यूक्लियर वेस्ट. ओके गाइज, रिमेंबर दिस, न्यूक्लियर वेस्ट शोज अप इन ऑल द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, सब में न्यूक्लियर वेस्ट तो होगा ही. ओके, रिमेंबर दैट. अभी इफेक्ट्स क्या आती है सॉइल पॉल्यूशन की? विल जस्ट सी दैट डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, converts the region into wasteland, destroys the microorganisms in the soil. ठीक है ना, जो भी सॉइल के पॉल्यूशन के इश्यूज क्या आता है, फर्टिलिटी जो भी सॉइल की होती है वो बहुत डिक्रीज हो जाती है. सॉइल लाइक जो भी रीजन होता है आजू बाजू का, इट्स अ कंप्लीट वेस्ट लैंड. ठीक है, अभी वहाँ पे तुम बिल्डिंग नहीं बना सकते, यू कैन नॉट यूज इट फॉर एनीथिंग एल्स, यू कैन नॉट इवन प्लांट ट्रीज, इट्स जस्ट कंप्लीटली यूजलेस. ओके, एंड उसके अंदर के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है, चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा राइट कि इकोलॉजिकल बैलेंस होना इज लाइक सुपर इंपॉर्टेंट. अगर कोई भी जगह पे इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं हुआ देन पूरे का पूरा इकोसिस्टम खतरे में आ सकता है. ठीक है, नाउ व्हाट कैन वी डू टू प्रिवेंट सॉइल पॉल्यूशन? ठीक है, सो उसके मेजर्स दिए हैं, विल जस्ट रीड इट क्विकली. Controlled and judicious use of chemical fertilizers, pesticides and insecticides, proper disposal of industrial and urban waste, proper use of land and crop management, awareness program on proper soil utilization and its maintenance. ठीक है, अभी जो chemical fertilizers यूज होते हैं ना उसका proper use, controlled use होना चाहिए. ठीक है, government should proper उस limit होनी चाहिए कि you cannot put this much fertilizer in just इतना land, you have to अगर यूज करना है तो फिर तुम दूसरे लैंप पे ऐसे प्रॉपर फैला के यू कैन यूज द केमिकल फर्टिलाइजर. पेस्टिसाइड्स, जो पेस्ट होते हैं उनको भगाने के लिए इफ यू यूज पेस्टिसाइड्स यू शुड बी रियली केयरफुल, लेस अमाउंट में यूज करना चाहिए. इवन इंसेक्टिसाइड्स, जो इंसेक्ट होते हैं उनको किल करने के लिए, जो प्लांट्स के ऊपर इंसेक्ट्स होते हैं उसके लिए भी यू नीड टू यूज पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स इन अ लोअर अमाउंट. ठीक है, अभी इंडस्ट्रियल एंड अर्बन जो भी वेस्ट होता है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि सीधा चलो यहाँ पे सॉइल है फेंक दो, विल जस्ट बरी इट. नो, there should be proper disposal of those waste. Okay, proper use of land and crop management. अभी land का proper use होना चाहिए. You need to manage your crops. ठीक है, if you keep on using the same crop, same soil पे same crop करते ही जाओगे तो soil में से वो nutrients चले जाएंगे. ठीक है, so you need to have a proper crop management एंड अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए. ठीक है, जैसे एयर पोल्यूशन में अवेयरनेस प्रोग्राम थे ना कि पीपल नीड टू बी अवेयर अबाउट दिस, सो ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए फार्मर्स के लिए या फिर फॉर इवन इंडस्ट्री पीपल, सो दे नो कि सॉइल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करना है और उसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है. ठीक है, ओके, सो लेट्स सी अबाउट नॉइज पॉल्यूशन. वंस अगेन, नॉइज पॉल्यूशन, you all know what noise pollution is. Okay, noise pollution, let's just read the definition. Noise pollution is any undesirable sound dumped into the atmosphere leading to health hazards. ठीक है, ऐसा कोई भी साउंड हो which is completely useless, it is completely undesirable. अगर वो साउंड आजू बाजू के सराउंडिंग्स में होता है then we will call it noise pollution. ठीक है, the important sources of those of noise pollution are once again natural and man-made. Remember this, there are always going to be two types of pollutants, natural and man-made. ठीक है, natural pollutants sound noise pollution के कौन से होंगे? thunder, cyclones, heavy rainfall, hailstorms, waterfalls, ocean waves. ठीक है, thunder अगर बिजली गिरती है you can hear there's so much noise which is causing noise pollution. Cyclones, hurricanes, all that stuff, heavy rainfall, hailstorms, waterfalls. Even if you go next to a waterfall, there's like so much noise of water falling on rocks, you cannot hear anything.
Okay, ocean waves, etc. Those are natural noise pollution के pollutants. ठीक है, मैड मेड, वंस अगेन इंडस्ट्रियल नॉइज, इंडस्ट्री से जो भी नॉइज आती है, ऑटोमोबाइल्स, कार के जो भी साउंड आता है, हॉन्क्स बजाते रहते हैं, ऑल दैट स्टफ, सो उससे भी जो भी नॉइज होती है, इट गोज इनटू नॉइज पॉल्यूशन. Aircrafts, okay, if you hear an aircraft like taking off, that noise is like so unbearable, तुम like you cannot literally hear it. Okay, it's like so bad. अगर सुन लिया तो like your ear will get damaged if you stand next to a plane taking off. It's just so loud. Domestic noise, जो घर के अंदर जो भी आवाज़ होता है, या फिर घर का अराउंड जो भी आवाज़ होता है. माइनिंग, वंस अगेन, ओके, माइनिंग से भी बहुत सारा आवाज़ होता है. ओके, इफ़ यू कीप ऑन माइनिंग अ रॉक, ऑब्वियसली देयर इज गोना बी लॉट्स ऑफ साउंड, सो दैट्स गोना लीड टू नॉइज पॉल्यूशन. ओके, नॉइज पॉल्यूशन सबसे ईजीएस्ट है. ओके किड्स, इट्स लाइक सुपर ईजी. जो भी चीज़ों से आवाज़ होता है, इट लीड्स टू नॉइज पॉल्यूशन. That's it. That's how you can remember it. Now, effects of noise pollution. Let's see noise pollution के वजह से क्या क्या issues आते हैं. Noise pollution causes temporary or permanent hearing problems, headaches, restlessness, cardiovascular disease, psychological disorder, behavioral changes and lack of concentration. ठीक है, अभी अगर तुम्हारे आसपास बहुत सारा नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, तो तुम्हारे हियर कान के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. ठीक है, तुम्हें हियरिंग प्रॉब्लम्स होंगे, टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट इश्यूज भी हो सकता है. ठीक है, यू कैन लूज योर हियरिंग परमानेंटली. ओके, यू विल बिकम डेफ. हेडेक्स बहुत हो सकते हैं इफ़ यू आर अराउंड नॉइस पॉल्यूशन. रेस्टलेसनेस, ठीक है, यू कैन नॉट प्रॉपरली स्लीप और यू कैन नॉट रेस्ट प्रॉपरली, ऑल दोज इश्यूज. कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, हार्ट की जो भी डिजीजेस है उसकी वजह से हो सकती है बिकॉज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन. बिकॉज यू हैव सो मच स्ट्रेस, बिकॉज इट गिव्स योर ब्रेन सो मच स्ट्रेस, इट कैन लीड टू सो मेनी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस. ओके, उस कार्डियोवैस्कुलर का जस्ट मीनिंग कि तुम्हारे हार्ट और तुम्हारे वेन्स एंड आर्टरीज के रिलेटेड जो भी होता है, दैट इज कार्डियोवैस्कुलर. ठीक है, रिमेंबर दैट, इट्स सुपर इजी. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, साइकोलॉजिकल जो भी इश्यूज आते हैं, बहुत सारा स्ट्रेस बढ़ जाना, योर मेंटल हेल्थ इज नॉट प्रॉपर, नॉइस पॉल्यूशन की वजह से दीज थिंग्स कैन हैपन. ठीक है, बिहेवियर के अंदर चेंजेस आ सकते हैं, तुम्हारे मूड के अंदर चेंजेस आ सकते हैं. ठीक है, लाइक एंड लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. वंस अगेन, अगर बहुत सारा आवाज़ हो रहा है तुम्हारे आसपास, ऑब्वियसली तुम पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे. ठीक है, सो दैट्स वाई नॉइस पॉल्यूशन इज सुपर बैड. Okay, how can you prevent noise pollution? So there are some measures given. Let's just see that. Industries must be located away from residential areas. Construction of soundproof walls in factories. ठीक है, अभी इंडस्ट्रीज होती है उसको रेसिडेंशियल एरिया से दूर रखना चाहिए. ठीक है, तो इंडस्ट्री का जो भी साउंड है ना, वो रेसिडेंशियल एरिया तक पहुंचना नहीं चाहिए. ठीक है, अभी कंस्ट्रक्शन ऑफ साउंड प्रूफ वॉल्स इन फैक्ट्रीज, अभी जो भी फैक्ट्रीज होती है ना, उसके जो वॉल्स होते हैं ना, उसको साउंड प्रूफ होना चाहिए. ठीक है, सो द साउंड कैन नॉट गेट आउट वहाँ से, एंड सो इट डज नॉट नॉइस पॉल्यूशन आजू बाजू में ना हो. रिस्ट्रिक्टिंग अननेसेसरी यूज ऑफ सायरन्स, हॉर्न्स एंड लाउड स्पीकर्स. ठीक है, अभी सायरन्स जो भी होता है, हॉर्न्स एंड लाउड स्पीकर्स, उन सब का यूज़ रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए. अगर ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ हॉर्न मत बजाओ. ऑब्वियसली ट्रैफिक के अंदर आपने देखा होगा, अननेसेसरी बहुत हॉर्न्स बजते हैं कार्स में से. ठीक है, दैट्स नॉइज पॉल्यूशन. ठीक है, दैट्स लाइक सुपर अननेसेसरी. लाउड स्पीकर, कोई जोर जोर से गाने बजा रहा है लाउड स्पीकर पे, दैट्स कम्प्लीटली अननेसेसरी. ओके, सो दोज आर दी, you can prevent that. Okay, if you prevent that, then noise pollution कम हो जाएगा. ठीक है, एयरपोर्ट्स मस्ट बी लोकेटेड अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल जोन्स. एयरपोर्ट्स होते हैं, अगर वो लाइक एयरपोर्ट के आसपास तुम्हारा घर होगा, तो तुम्हें हर रोज प्लेन टेक ऑफ होगा, उसका आवाज़ सुनाई देगा, एंड दैट्स लाइक अ सुपर बैड नॉइज, एंड दैट्स नॉइज पॉल्यूशन. ठीक है, सो जैसे इंडस्ट्रीज रेसिडेंशियल जगह से अलग होनी चाहिए, वैसे एयरपोर्ट्स भी रेसिडेंशियल जो भी सोसाइटी एरियाज हैं उनसे दूर होने चाहिए. ठीक है, प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स, द वर्क, या प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए वर्कर्स के पास. जो वर्कर्स फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनको प्रॉपरली ईयर प्लग्स देनी चाहिए. ठीक है, सो उनको नॉइस पॉल्यूशन से इशू ना हो. ठीक है, देन देर आर नॉइस प्रोड्यूसिंग व्हीकल्स मस्ट बी चेक्ड. अगर if your vehicle is making so much noise, then obviously get it checked. Okay, and loud vehicles और उन सब पे prohibition होना चाहिए. ठीक है, so noise pollution कम हो जाए. Okay, noise pollution in my opinion is like the easiest one. ठीक है, noise pollution की definition बहुत easy है. effects क्या होते हैं, effects you can easily remember, and उसको कैसे control करना है, simple है. जो भी चीज़ का आवाज़ आ रहा है उस पर put proper control. ठीक है, और आवाज़ मत करो, that's it.
Okay, so we saw about different types of pollutions. Now let's just see about global warming. ठीक है, what is global warming, greenhouse effect and ozone depletion. हमने इसके बारे में थोड़े बात की थी, but let's just see what they exactly mean. Okay, so global warming के definition, उसका explanation दिया है. Let's just see. The temperature of the earth is increasing slowly over the years. For the last few years, the global temperature has increased. The phenomenon is termed as global warming. ठीक है, अभी अर्थ का जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, उसका जो भी पूरा फिनोमिनन है, लाइक इसके लाइक दैट थिंग हैपनिंग विल कॉल इट ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, जो ग्लोबल टेम्परेचर्स है, एवरेज टेम्परेचर्स होते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, एंड दैट फिनोमिनन विल कॉल इट ग्लोबल वार्मिंग. The warming of atmosphere is caused by greenhouse effect and trapping of heat by the atmosphere. ठीक है, जो तुम्हारा एटमोसफियर है ना अर्थ का, that keeps on getting warm, that is because of greenhouse gases. ठीक है, एंड जो भी हीट आती है ना सन से, दैट गेट्स लाइक इट गेट्स ट्रैप्ड, the heat gets trapped between the land and the atmosphere, and that's why the atmosphere keeps on getting warm. Okay, the world is getting warmer, climatic zones are shifting, glaciers are melting, and the sea level is rising due to global warming, high rate of melting of ice in Himalayas, Arctic and Antarctic regions. ठीक है, so global warming की वजह से issues क्या आ रहा है? The world is getting warmer. ठीक है, you might have noticed the summers, they keep on getting more and more hotter every year. क्लाइमेटिक जोन में चेंजेस आ रहा है. ठीक है, कभी भी बारिश हो जा रही है, समर का टाइम है, मानसून है भी नहीं तो भी बारिश गिर रही है, विंटर के टाइम में बारिश गिर रही है. ठीक है, इज इट लाइक टोटली रैंडम? मानसून के टाइम पे देयर इज नो रेन. क्लाइमेटिक जोन्स शिफ्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस हो रहा है. रिमेंबर इन द लाइक वंस अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट इकोलॉजिकल बैलेंस. once again the balance में जो अगर एक बार इशू आ गया, then the entire system goes into a problem. ठीक है, सो दैट इज हैपनिंग. और सी लेवल्स जो हो रहे हैं वो राइज हो रहे हैं. कैसे? जो ग्लेशियर्स होते हैं, जो आइस होता है एट नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इवन हिमालयाज, सारे माउंटेन्स पे वहाँ पे ग्लेशियर आइस होते हैं, दे मेल्ट, एंड मेल्ट होके वो पानी किधर जाएगा? ओशन में, एंड ऑल दैट वाटर गोज इनटू द ओशन. सो उसका सी लेवल बढ़ रहा है. ठीक है, एंड अगर सी लेवल बढ़ जाता है, and that is like super bad for coastal cities. अगर like if you live around an ocean region, ठीक है, ओशन के बाजू में रह रहे हो, सी लेवल बढ़ रहा है, तो obviously you will get water till your house, and that is like super bad. ओके, एंड ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से. ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट एग्जैक्टली. सो द एनर्जी दैट द अर्थ रिसीव्स फ्रॉम द सन, अर्थ पे जो भी सन के द्वारा एनर्जी आता है, ठीक है, सन रेज आते हैं, हैज़ टू बी बैलेंस्ड बाय द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस. ठीक है, अभी जो सारी एनर्जी आ रही है अर्थ पे, ठीक है, एंड दैट इज वार्मिंग अप द अर्थ, बट अर्थ में से भी रेडिएशन बाहर निकल रहा है. ठीक है, सोलर लाइक हीट एनर्जी एंड ऑल दैट स्टफ, वो भी बाहर निकल रहा है. ठीक है, उसके साथ बैलेंस होना चाहिए. बट what is happening, the use of fossil fuels, जो fossil fuels जो होते हैं ना, पेट्रोल, मीथेन एंड ऑल दैट स्टफ, उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर इंक्रीज आ गया है. ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा हो गया है. ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर वी विल टेक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एंड स्टीम, H2O, जो भी स्टीम होती है ना, दैट इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस, एंड उसकी वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर वो बढ़ गया है, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ ब्लैंकेट. ठीक है, सन से एनर्जी आ रही है अंदर, बट अर्थ से जो एनर्जी बाहर निकल रही है, इट्स नॉट बीइंग एबल टू गो आउट एंड इट गेट्स ट्रैप्ड. ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर एनर्जी अंदर आ गई, बट इट कैन नॉट गो आउट, एंड दैट्स व्हाई द अर्थ कीप्स ऑन वार्मिंग अप. ठीक है, इसकी वजह से अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर है, इट्स इंक्रीजिंग. ठीक है, सी, carbon dioxide and other greenhouse gases trap the heat radiated from the earth, thus increasing of greenhouse gases is causing an increase of temperature. This is called the greenhouse effect. ठीक है, ये सारा जो इफेक्ट होता है उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलेंगे. ठीक है, now one more thing which is closely related to greenhouse effect is ozone depletion. ठीक है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में there is an ozone layer. ठीक है, ozone layer protects us from the harmful ultraviolet rays, जो सन में से जो भी रेज आते हैं ना अल्ट्रावायलेट, उससे हमको ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, बट अभी धीरे धीरे ओजोन लेयर भी डिस्ट्रॉय हो रहा है. कैसे? विल जस्ट सी. ओजोन इज अ थिन लेयर ऑफ गैस फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फियर. ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर मतलब जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स होते हैं. ठीक है, उसमें जो स्ट्रेटोस्फियर का नाम का लेयर है, वहाँ पे ओजोन लेयर होता है. ठीक है, ओजोन अब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज
coming from the sun and it protects all forms of life on Earth's surface. ठीक है, अर्थ के सरफेस पे कोई भी लाइफ फॉर्म्स हो, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, डजंट मैटर, उसको अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर. ठीक है, अभी now in recent years what is happening, एयर कंडीशनर का यूज, रेफ्रिजरेटर्स, स्प्रेज एंड डिओड्रेंट्स का जो भी यूज हो रहा है उसकी वजह से उसमें से गैसेस निकल रहे हैं. ठीक है, CFCs, रिमेंबर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उसमें जो जो भी गैसेस निकल रहे हैं, ठीक है, दे गो इनसाइड द एटमॉस्फेयर एंड दे आर स्लोली डिस्ट्रॉइंग द ओजोन लेयर. ठीक है, ओजोन लेयर जो भी होती है ना उसके अंदर होल्स बनते जा रहे हो, ओजोन धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है. ठीक है, once again if the ozone layer entirely goes away, हमको ultraviolet rays से कौन प्रोटेक्ट करेगा? कोई नहीं. ठीक है, एंड देन लाइक इट्स सुपर बैड फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स एज वेल. ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है इन sprays and deodorants are destroying the ozone due to the synthetic chemicals released inside the atmosphere, primarily chlorofluorocarbons, CFC. ठीक है, ये रेफ्रिजरेटर, स्प्रेस, डिओड्रेंट, उसके सब के अंदर CFCs प्रेजेंट होता है एंड वो एटमोसफियर में जाता है. ठीक है, the highest ozone depletion in the world is recorded in the atmosphere over Antarctica. The ozone depletion has caused the ozone hole. This has to be controlled for the sake of people of the present and future generation. जो Antarctica है ना, साउथ पोल पे, there is a really big ozone hole over Antarctica. ठीक है, and we need to control that ozone depletion. We need to control the use of CFC and all that stuff. अगर नहीं किया तो हमारी जो present generation है और जो भी future generation है उसके लिए बहुत सारे issues like you know आ जाएंगे. That's why we need to control the ozone depletion. ठीक है, is that understood? It's like super simple. ठीक है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस, एंड उसका डिप्लीशन हो रहा है बिकॉज ऑफ CFC, रिमेंबर दिस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ओके, एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ से आता है? रेफ्रिजरेटर्स, ACs, डिओड्रेंट्स, एंड उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं, दे गो इन द एटमॉस्फेयर एंड दे स्लोली डिप्लीट द ओजोन लेयर. ओके, super simple. Okay, so one of the last issues is acid rain. Okay, acid rain का मतलब कैसे होता है? We'll just read. Acid rain contains high amounts of acids, particularly sulfuric acid and carbon monoxide. It is caused when the raindrops pass through the polluted atmosphere. The rainfall with poisonous acids kill marine organization. Acid rain is damaging to forests, agricultural crops, old buildings and monuments. ठीक है, now acid rain literally means कि जो बारिश आ रही है ना उसके अंदर एसिड मिक्स होके आ रहा है. ठीक है, अभी जस्ट इमेजिन कि पॉल्यूटेड गैस क्लाउड है. ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वो सारे जो भी गैसेस कार में से निकलते हैं, उसका एक गैस क्लाउड है, उसके ऊपर से बारिश आ रही है. ठीक है, क्लाउड्स में से इट पासेस थ्रू दोस क्लाउड्स एंड उसके अंदर का जो भी सल्फर डाइऑक्साइड होता है इट गेट्स मिक्सड विद द रेन एंड उससे एसिड बन जाता है. ठीक है, सल्फरिक एसिड बन जाता है एंड वो उसके साथ गिरता है. नाउ एसिड रेन इज लाइक सुपर बैड फॉर मरीन एनिमल्स. ऑब्वियसली अगर वो पानी लाइक जो भी बारिश है अगर वो सी पे गिरती है, द एंटायर सी विल बी एसिडिक. ठीक है, उसके वजह से so many aquatic life, so many marine organisms, they will just die. Acid rain also damages forest. अगर acid rain trees पे गिरती है, obviously trees को पानी चाहिए survive करने के लिए, बारिश आती है, it will destroy your agricultural crops, it will destroy your forests. Acid rain is super bad. ठीक है, पुरानी बिल्डिंग्स होती है उस पर अगर एसिड रेन गिरेगा इट विल कोरोजन हो जाएगा. ऑल्सो मॉन्यूमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट हैव सीन कि ताजमहल जो है it used to be white, but due to acid rain Taj Mahal ka color is slowly shifting to a yellowish color. Okay, also so that is super bad. So we need to make sure कि acid rains ऐसे ना हो, and to make sure कि acid rain doesn't happen we need to control the air pollution. ठीक है, now acid rain is also referred to as a lake killer. The black triangle stretching over Poland, Czech Republic and Southeast Germany is one of the worst acid rain affected regions in the world. ठीक है, acid rain को lake killer भी बोलते हैं. Why? Because of अगर वो बारिश लेक पे गिरती है, लेक के अंदर जो भी animals होते हैं they all die, obviously aquatic animals, and the entire lake becomes acidic. ठीक है, so यहाँ पे there is an example given, the black triangle stretching over Poland, Czech Republic एंड साउथ ईस्ट जर्मनी. ठीक है, रशिया के आसपास का जो भी पार्ट है, पोलैंड, चेक रिपब्लिक एंड साउथ ईस्ट जर्मनी, वहाँ पे जो भी ट्रायंगल फॉर्म होता है इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट एसिड रेन अफेक्टेड रीजन्स इन द वर्ल्ड. ओके, सो वहाँ पे एसिड रेन इतना गिरा है कि इट्स जस्ट लाइक वहाँ पे एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड. ओके, सो वी नीड टू बी रियली केयरफुल अबाउट एसिड रेन.
Okay, and to prevent acid rain, we need to be careful about air pollution. Okay, moving on, let's talk about biodiversity, the variety of flora, plants, fauna, animals. Okay, remember this. Flora means plants. Flora कैसे याद रखते हैं? Flora means flowers, means plants. Fauna means animals. ठीक है, फ्लोरा एंड fauna जो भी कोई भी रीजन के अंदर होते हैं उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे. ठीक है, distribution of different kinds of plants and animal species in a region shows the richness of biodiversity. ठीक है, now if there is only a certain type of plant, ठीक है, if there is only, let's say, mango plant everywhere, okay, then we cannot call it a proper rich biodiversity. ठीक है, but if it has a mango plant, an apple plant, and different trees, okay, different flowers and all that stuff, then we'll call it rich in biodiversity. Okay, same for animals. अगर animals के अंदर if you just see elephants everywhere, ठीक है, if you go to a zoo and there are only elephants, there are no lions, there are no tigers, there are no monkeys, there's just elephants, then it would be a boring zoo, right? So same way, different types of animals, different varieties of animals and plants, that means that the biodiversity around us is like a rich biodiversity. Okay, so variety is important when it comes to biodiversity. The maintenance of biodiversity is very important both for the quality of environment and also for human survival. ठीक है, जो भी biodiversity होती है, which just means plants and animals living together, उसका जो भी maintenance है, it's like super important. You know why? It's not just important for human survival, but also for the quality of environment. Okay, once again, remember the term ecological balance. ठीक है, that's why we need to maintain them properly. The conservation of biodiversity is very important to save and protect rare plants and animal species. Providing good environmental condition for the living is the best means of protection. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना इज सुपर इम्पॉर्टेंट बिकॉज कोई प्लांट्स एंड एनिमल्स इतने रेयर होते हैं दैट वी नीड टू सेव देम. यू माइट हैव हर्ड अबाउट कि टाइगर इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज इन इंडिया. ठीक है, यू नीड टू प्रोटेक्ट टाइगर्स बिकॉज वन डे अगर सारे टाइगर्स मर जाएंगे, इफ दे गो एक्सटेंड, देयर विल कम अ डे कि तुम कहीं पे टाइगर ही नहीं देख पाओगे. ठीक है, जू में जाओ, बाहर सफारी पार्क में जाओ, यू विल नेवर बी एबल टू सी अ टाइगर. Okay, and that entire species has died off. Okay, and which is super bad. That's why we need to protect these animals and also plants. There are some rare kinds of plants. ठीक है, अगर उनको proper nourishment and protection ना दो, then they will just die off, and then there won't be any other plant. Okay, just imagine all the mango trees in the world, they just died. Then you will not have mangoes ever. That's why we need to protect plants and animals. Okay, and that's like the best protection, giving them proper living conditions. Okay, the earth is the only living planet in our solar system. The way in which changes, distribution hazards are taking place on earth can lead to destruction of the quality of life on our earth in the near future. Okay, once again I said there are 8 planets in the solar system, right? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Neptune and Uranus. ठीक है, ये सारे planets में से only earth has living life. Okay, only earth is where animals, plants and us human beings exist. Okay, that means if we do not protect the ecological balance on the earth, and if we do not सारे disturbances or सारे pollution को, if we do not stop it properly, then one day what happens is the entire life on earth might die out. Okay, and that is super bad. जो भी quality of life का destruction, it's the destruction will happen, and then we won't be able to live on earth. Okay, so to save earth and mother planet, we must educate people, formulate awareness programs, utilize resources judiciously, control pollution awareness through education, and seminars and skits and films and summits. These are necessary to save our mother earth. Okay, we live on this planet. Okay, that means we are responsible to take care of this planet. Okay, that means we have to educate other people. We need to bring in awareness. We need to tell people, okay, see, pollution is super bad, we need to control pollution. If you do not, then we're gonna have an issue. Future में earth पे we won't be able to stay. ठीक है, earth gives us so much stuff, right? We get so many plants, we get to see so many animals, but if we don't take care of earth, then earth will not take care of us. Okay, if we keep polluting air, water and soil, then in future we won't have proper air to breathe. Okay, we won't have proper drinking water, we won't have soil जहाँ पे हम plants और सारे crops plant कर पाएंगे.
ठीक है. That's why we need to take care of it. That's why we need to take care of our earth. Okay. And that's it. That's the end of your chapter. There are some exercises. These are like super easy. What is biosphere? Once again, ऊपर मैंने जो definitions highlight करवाई है, that's it. वहाँ पे जो भी दिया है, what is biosphere, define ecology, different types of environmental pollution, all that stuff. ठीक है. Definitions है, आप वहाँ से like लिख लेना ऊपर से. Once again, super easy. There are some activities. Read it. Okay. That's it for this video, guys. I'll see you in the next video. ठीक है. I hope you learned something.